you had Madam and Sir had taken a part of this practical, that was maintenance of aquarium, where they have taught you about various equipments used for the setting up of an aquarium, right? So today we will further see various other plants and animals which are required to be set in this particular uh, system, aquarium system. Okay, so I will just move to the next slide. So first of all, we will have a look on different species of aquarium plants. The very first species which we are going to talk about is Vallisneria. Vallisneria is a tall rosette type of plant. It can tolerate the salinity level of water which is very low. So basically आप जब aquarium setup करते हो, I hope last practical you have come across this tab point where एक्वेरियम दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर एक्वेरियम होता है, एक होता है मरीन वाटर एक्वेरियम. So the animals in these aquariums are going to differ, and with the animals जो भी substratum है या plants है ये भी vary करते हैं, because they have to be properly adjusting with that marine water and high salinity. सो नॉट ओनली फिशेस हम एग्जैक्टली वैसा टाइप का लेते हैं कि फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर के फिशेस, मरीन है तो मरीन वाटर के, बट प्लांट्स ऑल्सो वी नीड टू सी टू इट दैट दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टॉलरेटिंग लो salinity in case of fresh water and higher salinity in case of marine water. These plants can also be kept under little brackish water type of aquarium. Okay, even in that you can keep these plants because they can tolerate that level of salinity, slightly difference in the salinity. If you see the leaves of these plants leaves are very impressive looking, so that when you put in the water, it is going to stand tall in the water. Okay, and that is why it is said that it gives an impressive look when it is introduced in the aquarium. The shorter height makes these plants better for fixing with other plants as well. इसके हाइट ज़्यादा जल्दी बढ़ती नहीं है, सो आप इसे दूसरे प्लांट्स के साथ एडजस्ट भी कर सकते हो एक्वेरियम में, एंड इट इज़ मोर सूटेबल टू अ स्ट्रक्चर्ड एक्वेरियम. स्ट्रक्चर्ड यानी कि वेर यू आर ट्राइंग टू हैव अ बॉटम, देन यू आर क्रिएटिंग सर्फेसेस, लेयर्स आप क्रिएट करते हो. ओके, जैसे आप एक छोटा सा स्टोन डालते हो फिर एक बड़ा स्टोन है, यू आर क्रिएटिंग लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द एक्वेरियम. So for that kind of well decored aquarium जहाँ आपको एकदम proper management के साथ आप करते हो, you can use this Vallisneria, and but there are other aquarium species of plants विच आर वेरी हार्ड टू कंट्रोल, बिकॉज उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ फैल रहा है वहाँ फैल रहा है. सो यू नीड टू कीप अ चेक ऑन दोज प्लांट्स सो दैट अगर एक्सेस ग्रोथ हो गया तो उसे कट ऑफ करना है. बट विथ केस ऑफ वेलिसनेरिया आपको ऐसा नहीं है, इट इज़ वेरी इजी टू बी कंट्रोल्ड. द ग्रोथ इज़ नॉट वेरी ह्यूज, इट इज़ वेरी stout in size, tall. Okay, it will the grasses will grow tall, and the roots are also in a very controlled manner. These plants, only the roots of this plant is kept inside the planting material. यानी कि कल आपने देखा रहेगा अलग अलग टाइप के सब्सट्रैक्टम्स यूज करते हैं हम एक्वेरियम बनाते हुए. आइदर वी यूज पेबल्स और स्टोन्स और ग्रेवल्स यूज करते हैं, या तो फिर हम सैंड मटेरियल यूज करते हैं, राइट. सो इन आइदर ऑफ दिस केसेस, वेदर इट इज द ग्रेवल और इट इज द सैंड, इसका जो बॉटम एरिया है, इफ यू सी दिस बॉटम एरिया, आई होप द एरो इज सीन. सो दिस बॉटम एरिया जहाँ पे रूट्स है, द रूट्स आर मिक्सड विद द लिटिल सबस्ट्रेटम और सॉइल पार्ट. दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सबस्ट्रेटम, वेदर इट इज द ग्रेवल के अंदर थोड़ा सा होता है ना, जैसे आप खड्डा करोगे, इसको डालोगे एंड अगेन उसको उसके रूट्स को आपको कवर अप करना है. सो दिस इज हाउ ओनली द रूट पार्ट विल बी एंटरिंग इनटू द सबस्ट्रेटम. Planting these plants into the aquarium too deep can cause rooting of the stem. तो आपको इसे
एकदम अंदर बोलते हैं एकदम बड़ा खड्डा करके अंदर तक घुसाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ वेरी सरफेशियल सुपरफिशियल प्लांटिंग की ज़रूरत है इसको, मतलब हल्का-सा आप सॉइल थोड़ा शिफ्ट करो, इसे वहाँ पे बिठाओ एंड इसके ऊपर थोड़ा सॉइल डाल दो। सो आपको एकदम डीपली इसे प्लांट नहीं करना है, इट हैज़ टू बी सुपरफिशियली प्लांटेड, बिकॉज़ अगर आप डीपली उसे प्लांट करोगे, उसकी रूट्स में स बोलते हैं ना, इट विल सड़ना शुरू हो जाएगा, इट विल स्टार्ट रॉटनिंग। And if that happens, if the roots start rotting, the plant will die very soon. Plants anchor with aid in planting of these types of plants. So बेसिकली क्या होता है, इस टाइप के जो प्लांट्स है ना, ये एंकरिंग करने के लिए, यानी कि उसे तुम्हें आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होती है। ओके, एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है उसे एंकर करने के लिए। यू हैव टू जस्ट सिंपली अलाउ इट टू सिट ओवर देयर, एंड एज वेल एज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर ऑल्सो, ये बाकी के दूसरे प्लांटिंग के लिए भी आपको बोलते हैं ना, इट हेल्प्स यू प्लांटिंग अदर प्लांट्स ऑल्सो। तो आपको क्योंकि इसीलिए को ज़्यादा अंदर तक डालना नहीं है बाकी के प्लांट्स के जैसे, इट हैज़ टू बी केप्ट सुपरफिशियली, सो इट विल गिव प्लेस टू अदर प्लांट्स so that it can be mounted inside the sand or the substratum easily. The second aquarium plant which we study here is the Bolbitus. Bolbitus is a plant which is also too tough for goldfish to gaze upon. Much like a Java fern, Bolbitus does well in cool water, doesn't require high light for the growth of the leaf, because we know plants require light. तो आप ऐसा नहीं है कि आपने अपने एक्वेरियम में प्लांट्स तो डाल दिए पर इसको एक अंधेरी जगह पे रख दिया है, नहीं। You have to either keep it where a little amount of sunlight is entering your room, and these plants can see those sunlights, or else even other than the sunlight also you have to add these lightning bulbs, okay, which will be providing as much as energy, which will try to balance out the sun. So again, these are all cool water plants and do not require high light. तो एकदम से आपको से सनलाइट एकदम कंप्लीट एक्सपोज नहीं कर रहा है, बट लिटिल ऑफ सनलाइट विल ऑल्सो हेल्प इट टू ग्रो, एंड कैन ऑल्सो बी टाइड टू ड्रिफ्ट वुड और रॉक्स। तो इसके जो रूट्स है, यू कैन टेक द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स एंड टाई इट यूजिंग अ थ्रेड। यू कैन जस्ट बाइंड इट टू अ स्टोन हो या कोई ड्रिफ्ट वुड हो जो प्लांट के अंदर रख सकते हैं, उसको भी आप टाई अप करके इसे वाटर में प्लेस कर सकते हो। This is a beautiful plant, and it is recommended for tanks without goldfishes. Okay, ज़्यादातर गोल्ड फिश वाले टैंक में इसे नहीं रखते, सॉरी गोल्ड फिश वाले टैंक्स में रखते हैं, बट अदर देन ऑल्सो अदर फिशेज ऑल्सो यू कैन यूज दीज बॉलपेटस इन दैट पर्टिकुलर टैंक्स. Now, other than these two are given for you in your syllabus, but other than these two plants also, there are various other water plants which are used for the aquarium setup. Okay, depending upon what type of aquarium escape you want to prepare, depending upon that the type of plant is used. अगर आपको लॉन टाइप चाहिए तो आप सिर्फ मॉस टाइप के जो प्लांट्स है, ओके, जो मॉस के कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, या ग्रासेस है, माइन्यूट ग्रासेस है, उसको आप प्लांट कर सकते हो. इफ यू वांट लिटिल बिगर प्लांट्स, so you can use the echinodotus, you can use the cryptocrane plants. ओके, देन क्रिप्टोक्रेन में भी अलग अलग टाइप के हैं. आपको लीफी स्ट्रक्चर में देना है तो लीफी स्ट्रक्चर के लिए सिलियाटा है. अगर आपको ग्रास लाइक देना है तो वी हैव बेंसे. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च plants which are also available in the market and can be used to be planted in the aquarium. Now, other than these plants, I would like to share with you few more other types of aquarium plants which are found and which are available in the market, and you can use it when you want to set up your aquarium. Such as rhizosome plants. This is how it looks like, the rhizosome. Okay, these are the leaves. It is more like a creeper type of a plant. Okay, these are the roots coming out. Again, you can see यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक wood है, ड्रिफ्ट वुड है, उसको उन्होंने टाई करके रखा हुआ है. ओके, एंड देन इट इज बीन केप्ट इनसाइड द वाटर बॉडी. सो आइदर यू कैन इंसर्ट इनटू अ सबस्ट्रेटम. सो इन वेरियस फॉर्म्स यू कैन इंट्रोड्यूस these rhizosomes, and rhizosome का structure देखो, it is proper a leaf like structure is there, so you can insert this into the water tank. Other than rhizosomes, we have the sword plant. So this is a sword plant.
ओके, यू कैन सी दीज आर द लीव्स, ये इसका क्राउन रीजन है एंड वहाँ से इसके रूट्स स्टार्ट होते हैं. सो swords are classified as again rosette plants. Okay, the leaves grow out of the base of the plant. So this is the base, यहाँ पे base था. So you can use your finger to dip a hole in the substratum and bury the roots of the sword, or you can use planting tweezers, छोटे से forceps आते हैं, आप वो use कर सकते हो to push the root into the substratum. Do not cover the crown. क्राउन यानी कि ये जो हिस्सा है, इसका बेस हिस्सा है, इसे कवर नहीं करना है, इसे आपको सबस्ट्रेटम के ऊपर की तरफ ही रखना होता है. Then other than that, as I told you, we can also use cryptocorne. These plants are also called as crypts because they are very short, for shorter type of rosette plants. These are okay. It grows very well even when it is, it doesn't require too much. Again, like other rosette plants which we saw, इसे भी एकदम deeply आपको माउंट करने की जरूरत नहीं है, आप इसे superficially water में माउंट करके रख सकते हो. There are again various species of crypts which are present. So the scripts are very prone to melting whenever they're introduced into a new aquarium. So don't throw away your crypts if the leaves are starting to fall off या एकदम सूख रहे से लग रहा है. So once the plants get used to the new surrounding, it will get submerged. The leaves will submerge. यानी जो पता जो एकदम मरे हुए लीफ लग रहे हैं वो अपने आप को बैलेंस करके नॉर्मलाइज हो जाएंगे. But before planting the crypts, some of the aquascapers even recommend trimming of the leaves before putting it in the plant. So this is how the crypts look like. This is one of the species, that is Lucinus. Others are grass-like plants. Okay, see this one. This is the microswords. We can use them. We can use these moss also. Okay, these mosses. They are similar to rhizome plants. These do not require substratum or can even be attached to any hard thing using a glue. तो आपको क्या करना है, वुड लेना है, उस पर थोड़ा सा ग्लू डाल के इन मॉस को आप चिपका दोगे तो एक्चुअली ये चिपकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली इम्प्लांट इट इनसाइड योर एक्वेरियम. ऐसे टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है मॉसेस, दे कैन ऑल्सो ग्रो ऑन अ लार्ज एंड फ्री फ्लोटिंग मास, which is greatly used when we are talking about colony breeding using baby fishes, so that these baby fishes कैसे होते हैं, अगर बड़े fishes के साथ रह रही है तो वो उसे खाने के चांसेस होते हैं, तो और वो डर जाते हैं. So in that case they can hide themselves under these covering of these mosses, जो छोटे छोटे baby fishes होते हैं. Okay, there are different type of moss available, जैसे कि java moss है, Christmas moss है. Okay, these are available. These are type of algae. Then there are stem plants also, different type of stem plants. One of these is the bacoba. Then the bulb plants. These are the bulb plants, also called as banana plants. Then carpenting plants, monte. Again, these are being used in the aquarium. Then there are floating plants. Similarly, many more other different type of plants can be seen when we talk about the aquarium plants. ठीक है, with this I will end the part of aquarium plants. Further I will show you a video about how the escaping यानी कि जो setup होता है aquarium का, हम कैसे कर सकते हैं using different type of plants and where and how to set up these plants. So let Rajkumari ma'am tell you about the aquarium animals, that is aquarium fishes. So once after we are completed with aquarium fishes, we will see how the aqua spacing is being done, aqua caping is being done. ठीक है, राजकुमारी मैडम, over to you. Thank you, ma'am. So, as madam has clearly explained us about the plant, similarly, we have some ornamental fishes which we can keep in our home or fish tanks. Okay, so we'll quickly see about those. Give me some time. I'm sharing my PPT. I hope it is visible to all. Yes, ma'am. Okay. So majorly, two fishes which we are going to see now are the one which we have already seen a lot of times and basic structure which you know. So first one is goldfish.
that is Carassius oratus. Goldfish, it helpful a lot because it sustain a wide range of temperature itself. So if we see, it goes up to 4 degrees Celsius to till 32 degrees Celsius. तो बहुत ज़्यादा बार ऐसे होता है कि there are certain temperature bracket for every organism. So अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कम फ़र्क पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो there might be chances that it will put a stress on the fish or ultimately the fish will die. So goldfish in that matter can survive from 4 degrees Celsius till 32 degrees Celsius. It is basically majorly known as a favorite fish because a lot of time people want to go ahead with the goldfish itself. So they are usually hardy fish, and they can live hardy as in they are able to sustain and adapt a lot of times, so they are able to live in a different conditions and environment altogether. Furthermore, their varieties are there. So goldfish can be available in different colors, similarly as gold, orange, white, black stripes and all that. So they have different marketing stuff, they have different varieties, fancy varieties to be seen, because it looks colorful. When it includes along with gold, they have a lot of colors also. So they are a lot of time makes the actual scene when you see the fish tank, the visual it gives is very nice and very good one. Then it is a very high quality fish and varies the diet, so their diet is not something which has been restricted. So you usually what do we do is we need to get the fish or the food which is in less quantity. Okay, बहुत बार ऐसे होता है that what we do is we buy the fish food in bulk and we keep the container as it is for many days. Obviously the food is not going to get wasted, but the nutritional values might go reduce according to the time. So usually when we open the lid and then we feed the food and all of those stuff might happen. So usually it is always advisable to buy the fish food in small quantities and use it wisely, and finish it in very less time or less amount of time. So usually high nutritional values diet is also required for them. And then they accept a lot of types of variety in the fish, sorry, the food. So they can have flags, they can have live or as well as freeze dried as in jinko the animals which have been dried or the worms which have been freeze dried present and as a food, they can have those also. Usually goldfish are omnivorous as in they can survive on both plant origin food diet as well as the animal origin food diet. So it is surviving on both the stuff. If you can see the structure, it is actually a visual one, so it gives the visual uh, decoration of the plant or the aquarium all sets. So this is goldfish, that is Carassius oratus. Next one which we are going to see is neon tetra. Neon, the name itself suggests, or the body color itself suggests the type of neon tetra, that is Parachirodon inaceus. So usually neon tetra comes in a light blue color back with a silver white abdominal, which we can see here, this abdominal part, and they have some sort of a dark olive green color shining lining on the body itself. Depending upon the gender or the sex of the fish, that can be male and female, the size differs, the marking also differs on the fish. Usually they grow up to 3 centimeter length, that is a longer one, how much the length will be. Sexual dimorphism is seen. There is a slight difference between male and female. Usually if you can see animals over here, the body structure is somewhat similar, but the male size is smaller compared to the female. They have a slim belly, so this belly part is very slim in the male than the female, so they have a very big belly or rounder belly in that such. And the stripe on the body, so if you can see here, the stripe, so this is a straight stripe we can see here on the male, but where in the female it is of a curve. Okay, so the stripe which covers the whole body and it is present in the curve, so that is neon tetra female. That's the difference between male and female. Neon tetras are again, those are also omnivorous, and they accept food in from different origin, that can be plant as well as that can be sorry, animal origin food. So they can have flex foods, they can have brine shrimps, freeze dried food, as or the blood ones as we have seen in the goldfish. So food set is also clear, they have the more variety. They are more active when kept in shoal is in when a lot of fishes are there in the tank, so you can see them in the most active zone or most active form at that
time, and they move around, they try to get the sense of the area and all of it. The colors also might fade or reduce by time to time when the fishes or neon tetras are under stress, basically when there is some sort of stress with respect to environment, or when the human intervention is so much. So basically what humans do is, if we try to clean the water a lot, or we go through and try to change the structure or systems a lot and decorations a lot, at that time it can put the pressure on the neon tetras, and they can fade the color. So as you can see the vibrant colors over here right now, so they can fade depending upon the stress the animal is going through or the fish is going through. So that is one. Neons are best kept in densely planted tanks, जैसे हम plants के बारे में अभी पढ़ रहे थे. So when they are kept in densely planted tanks are also good, and subdues light and where the ideal temperature is there. So जैसे हमने goldfish के बारे में बात किया था, that the temperature is 4 degrees to 32 degrees Celsius. Here the temperature bracket is 21 to 27 degrees Celsius. So basically that goes to their actual environment जहाँ से उनका origin बताया जाता है, that is Amazon environment. So basically that's the environment or temperature bracket where the neon tetra can survive. So these are two fishes which we can usually see as ornamental fishes. There are other varieties also along with these fish, but this is major two which we are studying right now. That is goldfish, Carassius auratus, and neon tetra, Parachirodon inaceus. I hope we are clear with these two. Yes, ma'am. Okay. Uh, yes, Suprita ma'am, over to you. Yeah, okay, okay, thank you. So that was about the aquarium fishes and the plants. So to set up an aquarium, you need to have an idea about how these plants should be placed, which plant is more suitable for which type of fishes. So you need to first study what type of, मतलब all the way from a tank, okay, ग्लास का टैंक या एक बाउल आप खरीदते हो, तो आपको क्या चाहिए, आपके घर में कितना स्पेस है, आपके स्पेस के हिसाब से आप अगर बाउल रखते हो या टैंक रखते हो तो क्या उसके लिए ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई करने के लिए आपके पास पॉइंट्स है. यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग बिफोर सेटिंग अप एन एक्वेरियम. Then which type of fish you want to bring, okay, how much do you want plants, तो अगर plants है तो कौन से fish होने चाहिए. So accordingly you need to first think about it, plan it, bring everything, the lights, the substratum, and then you can actually set up a very beautiful aquarium at your house. Even to set up a bowl ऐसे सुनने में बहुत easy लगता है, but if you really want to make it attractive and even feel make the fish feel very happy around, so you need to actually think, plan, and set up these aquariums. I'm going to share with you all a video showing how the escaping is done for plants. But before that, there is a one small point about the animals which I want to show you about the fishes specifically. When we talk about the fishes in the tank, we set up these fishes. अगर आपको एक से ज़्यादा fishes को या animals को introduce करना है water tank में, so you need to first study that there are different layers of animals according to the different layer of water. Okay, जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ फिशेस होते हैं जो टॉप लेयर ऑफ वाटर में हमेशा रहते हैं. ओके, एंड कुछ होते हैं जो हमेशा मिडिल लेयर ऑफ वाटर में प्रेफर करते हैं, एंड कुछ होते हैं जो बॉटम ड्वेलर्स होते हैं. सो यू कैन सिलेक्ट ईच ऑफ दीज एनिमल एंड पुट इट इन योर टैंक. एंड अगर आप एक ही लेयर के दो एनिमल्स, दो फिशेस लेके आते, दो अलग अलग स्पीशीज के फिशेस लाते हो, यू शुड सी वेदर दे आर पीस लवर्स और नॉट, आइदर दे कैन स्टे टुगेदर और नॉट. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक फिश ऐसा है कि बाकी के सबको परेशान करे, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो यू नीड टू हैव, व्हेन जब आप इस टाइप का एनवायरमेंट सेटअप करना चाहते हो, जब आपको अलग अलग लेयर्स के फिशेस चाहिए या फिर आपको 2 से 3 वेराइटीज चाहिए, यू शुड सी वेदर इफ दे आर टॉप लेयर्स, मिडिल लेयर्स और बॉटम लेयर्स. एंड अगर वो सेम लेयर्स के हैं, सो हाउ मच इज द फीडिंग कैपेबिलिटी ऑफ वन स्पीशीज और द अदर स्पीशीज. विल द अदर वन बी एबल टू एडजस्ट विद द फर्स्ट वन, विल इट चेस इट, are they aggressive. So all these natures needs to be studied before setting up of these aquariums. So here you can see for example जो टॉप एनिमल्स होते हैं, बेसिकली ये वो एनिमल्स है जो ऑक्सीजन जो है ना
वो एयर से भी गैप्स करने की, एयर से भी कैच करने की कोशिश करते हैं. सो दीज आर बेसिकली द फिशेस which you find it in the top layers of water, such as half-beak and silver hatch fishes. Middle layers are the tiger barbs, then your goldfish, then widow tetras, then rummy nose tetras. Uh, these are all middle layer fishes. Barbs, then bottom में आपको आता है कुल्ची लोच, then you can have cribenses. You can introduce shrimps also. अगर आपको shrimps रखना है, you can introduce shrimps. They are also bottom dwellers. Then the sucker fishes, those are again bottom dwellers. So you can introduce these different type of fishes which are belonging to different layers of water. Now, as I told you, I will show you about how this what we call a aquarium has been set up using different instructions. This is a small video I'm going to share. It is going to give you a detailed instruction about all these components. I hope you can see these. First, there's an introduction, then they will be telling about what is aquarium, then what type of substratum, then what is hardscaping, then what type of plants, lights, how to keep a check on the carbon dioxide, what type of filtration, maintenance. Now, filtration and maintenance were taught to you in your last practical, so we won't concentrate more on the last part, but we will just see the initial part of this video. And okay, I'll just play it. If you are not able to hear the audio from the video, just let me know. What is aquascaping? That is a question I get asked a lot. And the best short answer I can give you is aquascaping is creating a natural underwater layout. The biggest influence in aquascaping came from the legendary Mr. Takashi Amano. With his company Aqua Design Amano, he has made a huge impact on the aquarium hobby. In this complete aquascaping beginner's guide, I'll do my best to set you up for success by showing you the basics of aquascaping. Most aquascapers like to use rimless open-top aquariums made from extra clear glass with minimal clear silicone, and this is for a number of reasons. The clear glass and minimal silicone reduce any distractions when viewing the aquarium. An open-top tank also provides the opportunity to look into the aquascape from above. And an open aquarium also makes it easier to do regular maintenance. And most important, an open aquarium gives us the opportunity to let hardscape and plants come out of the aquarium, so it provides another dimension. Of course, you can use any type of aquarium you like, and I suggest you choose something that suits your home interior and suits your budget. And if you are new to the hobby, I also recommend to start with a smaller size aquarium. An aquarium around 45 to 60 liters or 15 to 20 gallons is great for beginners and easy to maintain. When the battle begins, Ayaka enters her Senho state, then swiftly draws near to her enemies to launch her attack. The versatile range of cryo abilities at her disposal creates opportunities to coordinate with her teammates. She gains control over her enemies, then alternates between normal and charged attacks to take them down. Just a minute. To start building an aquascape, we first need a substrate. Now you can use gravel or sand, but if you want to achieve great results and the best possible plant growth, I recommend to use aquasoil. It is a little bit more expensive, but it has a lot of benefits. Soil is an active substrate that contains a lot of nutrients and it slowly releases these nutrients to feed the plant roots. Soil will also make the water slightly more acidic as it lowers the pH. This is great as most aquatic plants prefer softer water. Another great benefit of soil is that it has something that's called a high cation exchange capacity. Now you can forget about that, but just remember that soil can soak up nutrients from the water column, lock that into the substrate and slowly release it to feed the plant roots. Aquasoil is also very beginner friendly since it is a complete substrate and doesn't require you to add anything else. Of course there are a lot of additives on the market, but you really don't need these as a beginner. It also does not need to be washed, so you can pour it straight into your aquarium and start scaping. One of the main goals with aquascaping is to create a sense of depth. So we want to try to make the aquarium look bigger and deeper than it actually is. And one way we can achieve that is by creating a slope with our soil. So when you are placing the soil into the aquarium,
we want to have a thin layer in the front and a thicker layer in the back. This will really help to create more depth as we start making our hardscape layout. To make our layout, we like to use rocks and or wood. We also refer to this as hardscape material. It's important to know the characteristics of your chosen hardscape material before you purchase it, as some rocks might leak calcium into the water and some types of wood might leak tannins or they may float. To prevent the wood from floating and potentially destroying your hardscape layout, you can either pre-soak it for a couple of weeks beforehand, you can weigh it down with some rocks, or what I like to do is just glue my rocks and wood together to form a solid structure that also does not float. The hardscape really is the main structure of our aquascape, so it's important to spend some time on creating a beautiful hardscape. I usually take a couple days to get a desired hardscape layout. A lot of beginners struggle to create a nice looking hardscape, and that is completely normal. Nobody won the IOPLC contest with their first hardscape, and just like anything else, the more you practice, the better you will become at it. If you want to practice making hardscapes or aquascapes, I suggest you take a look at the program scape-it.io. Here you can basically make a virtual aquascape, so it's a great way to get some extra training. And sizes, and some grow fast and some grow very slowly, some grow short and some grow long, and some prefer a lot of light and some prefer shadow. So before buying your plants, it's good to do some research on their requirements and if they would suit the idea for the kind of scape that you have in mind. You can find a lot of information on websites like dandeliplants.com or tropica.com. Traditionally, plants are grown above water in the nursery. These plants are more robust and can withstand shipping a lot better. Because they have been grown above water, these plants may start to look a little different after a few days in your aquarium when they transition to their submerged or underwater form. To clean them, simply take them out of their pot, remove the rock wool and divide them into portions. Now these days we see more and more in vitro plants, and these in vitro plants are grown in a laboratory under sterile conditions, and these plants are free from algae, snails and pesticides. Now even though these in vitro pots might look very small and more expensive compared to regular potted plants, they actually contain a higher quantity of plants. And in my opinion, in vitro plants also adapt faster to the conditions in our aquascape. Now a few tips for planting. To plant your aquascape, I recommend to use special aquascaping tweezers. These will make your life a lot easier. I prefer to plant in a wet substrate. I find that in a wet substrate, when I release the tweezers, the plants tend to stick better. I never really plant the aquascape when it's full with water. This might work when you're using heavy gravel or sand, but aquasoil is a very light substrate, and especially in the beginning it traps a lot of air bubbles. So when you start planting underwater, you're just going to end up with a bunch of plants that just keep floating back up. When setting up a new aquascape, I really recommend you to plant densely from the beginning. A new setup can easily get into. So here in this part, you could have seen that how he is instructing to plant these small plants, not using much of water, but just to wet the substratum so that the plants are sitting in it space. Because अगर आप टैंक फुल करके प्लांट डालोगे तो वो सबस्ट्रेटम में बैठेंगे नहीं और बार बार बाहर निकल के वाटर में फ्लोट करना शुरू करेंगे. To trouble with algae, and more plants will make this startup easier. When I started aquascaping, I always tried to save money on plants, so I would just buy one pot of each type of plant because I thought they will grow and multiply over time anyway, and this just gave me a lot of unnecessary problems with algae. For the plants to grow healthy and colorful, we need light. Now this is a topic that can easily get complicated because it raises so many questions. Therefore, I'm going to keep this simple by suggesting you to use an LED light which has white, red, green and blue LEDs, and that is dimmable as well. So you can increase or decrease the intensity when needed. I would also like to suggest that you keep your lights on daily for an average of 8 hours and do this with a timer, so you have a consistent photo period every day of every week. And it does not really matter when during the day you have your photo period. If you are away from home during the day and you want to enjoy your aquascape as much as possible in the evening, then just set your photo period from 2 p.m. till 10 p.m. for example.
Carbon dioxide is one of the most important nutrients for aquatic plants. A regular tap water only contains a small amount of CO2, which is not enough for most plants. Therefore, a lot of plants used in aquascaping require CO2 injection. A professional CO2 kit for aquariums consists of a pressurized cylinder, a regulator with a solenoid valve, and a diffuser. Besides that, it's also good to have a drop checker in your aquarium. This will tell you if you are injecting enough CO2 or not. The basic rule for CO2 is that it comes on an hour before your lights turn on and turns off an hour before your lights turns off as well. And my advice is to invest in a professional CO2 kit from the beginning. This will set you onto a great start with the aquascaping hobby. Now, setting up a CO2 system can be quite scary and overwhelming, so check out my complete CO2 setup guide if you want to get more familiar on this topic. Professional CO2 systems are quite expensive, and if you are on a low budget, then DIY CO2 can be a good option. Now, these type of CO2 setups are required when you are setting up a huge aquarium. Like if you talk about on a professional basis or when you are setting up a huge aquarium system, you have a shop or you are trying to set up aquarium for some industrial area, some professional bodies. They need bigger aquariums. So where you are going to plant many such small plants. Okay, so for them you require these carbon dioxide settings also. So learning these all small setups, you will be able to tomorrow you could open your own shop and you could help people setting up such aquariums at their house or in your any institute or their offices. You can set up such aquariums for them. It is a kind of your own business people do nowadays. It will help you to understand how it is done and what are the small minute details that need to know at a very basic level. I suggest you check out some of my DIY CO2 videos that I have on my channel. To maintain good water quality in our aquascape, we need to use a filter. There are a lot of different types of filters on the market, so let's go over a few of the popular Okay, ones. so about the filters, sir has already maybe told you about, sir and madam would have already told you about the filters in the last lecture. So I won't stretch on that. Rashmari ma'am, do you want to share something or can I continue? No, ma'am. Please continue. Yeah, okay. Okay, just give me a minute, students. I will share the video with you. अब तो बताओ ना, what are we celebrating? Anu, Oh, thank you. just a minute. Just a minute. एक प्लांटेड एक्वेरियम में फिश जो है ना, वो प्लांटेड एक्वेरियम का सुंदरता बढ़ाता है, उभारता है। लेकिन फिश रखने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो फिश कहां से आता है, कौन से रिवर में रहता है, उसका नेचुरल कंडीशंस क्या है, वगैरह वगैरह। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 फिश जो एक प्लांटेड एक्वेरियम में आप डाल सकते हो बिगिनर्स के लिए। अगर आप अभी अभी प्लांटेड एक्वेरियम शुरू कर रहे हो, बिगिनर हो या सीख रहे हो या शुरू किया है लेकिन और सीखने का चाह है, तो ये टॉप 10 फिश है जो आप ट्राई कर सकते हो। अलग अलग वेराइटीज के हैं, मैं थोड़ा जितना इजी हो सकता है समझाऊंगा, आप देखते जाओ। तो सबसे सिंपल इजी फिश जो है, नंबर 1 बुलाते हैं उसको, जो आप रख सकते हो छोटे बोल से लेके या एक छोटा सा प्लांटेड टैंक, सिंपल स्मॉल, इज बेटर या फाइटर फिश, साइनीज फाइटर भी बोलते हैं उसको। बहुत कलरफुल, ब्लू, रेड, व्हाइट, येलो, गोल्डन, हजारों वैरायटीज and beautiful fins, half moon, crown tail,
एलिफेंट ईयर्स, बहुत सारे। ये रखना सिंपल है, बहुत इजी है, उनको ज्यादा जगह नहीं चाहिए। वो फाइटर्स जो है हवा से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो इनको ज्यादा वो फिल्ट्रेशन का इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आप एक छोटा बोल या छोटा टैंक बना के उसमें अनुबियास फर्न्स डाल के आप उसमें फाइटर रख सकते हैं, वाटर चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखो, अगर आप श्रिम्प डालोगे तो फाइटर श्रिम्प खा जाएगा, और खाना जितना वो फाइटर खा सकता है ना उतना डालो, और वाटर चेंज करते रहो, तो आपका छोटा सा ये नैनो टैंक फाइटर वाला बहुत सुंदर रहेगा। ये सिंपलेस्ट है बिगिनर्स के लिए। एक फिश के बारे में समझ सकते हैं, और दूसरा प्लांट कैसे ग्रो होता है वगैरह वगैरह समझ सकते हैं। तो दूसरा जो है ना वो गप्पीज है। ये वैरायटीज जो है हम लाइफ बेरर्स बोलते हैं उसको। ये अंडा नहीं डालते, सीधा बच्चा देते हैं, लाइफ बेरर्स। बहुत इजी रखना है, कम्युनिटी 6, 8, 10, 12 टैंक साइज के हिसाब से आप रखो। कॉन्स्टेंटली मूविंग, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। बट ये हमेशा याद रखना, अगर मेल फीमेल है तो यूजुअली एक फीमेल के लिए 2 मेल रखो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन में रखो। मेल्स बहुत सुंदर होते हैं देखने के लिए, कलरफुल। फीमेल व्हाइटिश या वेरी लिटिल कलर, ठीक है। और फीमेल बड़ी होती है, मेल्स छोटे, फीमेल से भी छोटे, और बहुत इजीली ब्रीड करेंगे, ओके। और एक अगेन सिंपल प्लांटेड टैंक, इजी टू कीप फिश, कोई टेंशन नहीं है। ब्रीड भी करेंगे, मजा भी आएगा देखने में, बच्चे देखने में मजा आएगा। अगेन इनको भी फीडिंग लिमिटेड, ओवर फीड मत करना फिश को, प्रॉब्लम हो जाता है टैंक। हाँ, इनके लिए एक छोटा सा फिल्टर लगेगा। प्लांटेड अगर बनाओगे तो लाइट, CO2 है तो अच्छा है, बट अदरवाइज यू कैन स्टिल मैनेज विद वाटर चेंजेस एंड गुड फर्टिलाइजर। तीसरा जो है वो प्लाटीज, मॉलीज एंड स्वॉर्टेल। अभी गप्पीज के हिसाब से प्लाटीज, मॉलीज एंड स्वॉर्टेल्स थोड़े बड़े हैं, और बड़े भी हो जाते हैं। ब्लैक मॉलीज एंड ऑल बहुत बड़े होते हैं, 1 इंच 2 इंच कभी कभी इतना बड़े हो जाते हैं। और ये भी लाइफ बेरर्स और इजी टू ब्रीड, इजी टू कीप। मॉलीज algae खाएंगे, ठीक है। बट ऑल्सो रिमेंबर, ये सब छोटे छोटे प्लांट्स, जैसे अगर कारपेट प्लांट्स वगैरह है तो वो खा सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू वाले प्लांट्स, ठीक है। और कोई भी टैंक में एडजस्ट हो जाएंगे, कम्युनिटी टैंक में एडजस्ट होंगे। उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज है, सनसेट प्लाटी, स्वॉर्टेल में मैंड्रिन्स, ब्लैक मॉली, पैंडा मॉली, क्रिसमस, ये वो करके बहुत सारे वैरायटीज, कलरफुल बहुत है। तो आप उसके हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से आप रख सकते हैं। चौथा वाला अगेन वेरी वेरी इजी, और ये है गोरामी। नाउ गोरामी में बड़े साइज का है, छोटे साइज का है। ज्यादातर प्लांटेड टैंक में हम यूज करेंगे डुआफ गोरामी। नियॉन डुआफ गोरामी होता है ब्लू कलर का, या रेड कलर का भी आता है। ये 2 ऑप्शंस है। हाँ, नेक्स्ट यू कैन ऑलवेज यूज ब्लू गोरामी, मूनलाइट गोरामी, बट ये थोड़ा बड़े होते हैं, 3, 3.5 इंच तक हो जाते हैं। एंड ये वाले जो है थोड़ा अग्रेसिव भी होते हैं। अगर 2 मेल रह गए एक टैंक में तो फाइट करेंगे, और इनके फाइट के चक्कर में आपका प्लांटेड टैंक खराब हो सकता है। तो अगर बड़ा रखना है तो सिंगल रखो, ठीक है। और उससे भी बड़ा जो है जायंट गोरामी, किसी गोरामी, वो सब मत रखना, प्लांटेड टैंक के लिए अच्छे नहीं है, वो प्लांट्स खाएंगे, ओके। तो ये हुआ चौथा इजीएस्ट। पांचवा है बार्ब्स, BARBS, बार्ब्स। बहुत सारे वैरायटी, छोटे जैसे चेरी बार्ब, उसमें भी मेल फीमेल अंडा डालेंगे, बच्चे भी होंगे अगर आप ठीक से रखें तो। फिर है टाइगर बार्ब, ग्रीन टाइगर बार्ब, वेल टेल टाइगर बार्ब, टेनेसोनी बार्ब, ओडेसा बार्ब, चेकरबोर्ड बार्ब, सर्पेंटाइन बार्ब, बहुत सारे वैरायटीज है। ज्यादातर बार्ब्स इंडिया, इंडोनेशिया, एशियन रीजन्स में ही पाए जाते हैं। एग्रेसिव फिश है, ठीक है। मीडियम टू फास्ट मूविंग, थोड़ा बड़ा टैंक लगेगा इनको, ज्यादा छोटे टैंक में मत रखो। अगर आप 2 फीट टैंक में रख रहे हो तो एक ज्यादा से ज्यादा 12, उससे ज्यादा नहीं,
श्रिम्प जरूर खाएंगे, ठीक है, अग्रेसिव है तो श्रिम्प खाएंगे जरूर। और बेटर इनको 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट टैंक्स में ये बहुत सुंदर बढ़ते हैं, अच्छा बढ़ते हैं और सुंदर दिखते भी हैं, अमेजिंग दिखते हैं। तो बार्ब्स इज द नेक्स्ट ऑप्शन, ओके, इजी टू कीप, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो अपने आप में खुश रहते हैं। अगेन मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, ओवर फीड मत करो, जितना उनको लगता है उतना खाना दो और वो खुश रहे। सुबह में एक बार, शाम को एक बार, एंड वो ऊपर तक आ जाएंगे खाना खाने, वो आदत भी लगेगा उनको। वेरी एक्टिव, एक्सट्रीमली एक्टिव। नेक्स्ट फिश जो है इज एंजल फिश। एंजल फिश स्लो मूविंग, तो स्लो मूविंग फिश के साथ फास्ट मूविंग फिश मत रखना। वो अगर आपने बार्ब्स और एंजल साथ में रखा तो एंजल का फिन वगैरह काट देंगे, बिकॉज ये वेरी स्लो मूविंग है। तो स्लो मूविंग फिश अलग टैंक में होना चाहिए, और उसके साथ कोई टेट्रास वगैरह जो स्लो मूविंग, ठीक है। एंजल्स में ब्यूटी क्या है, अगेन मेनी वेराइटीज। शायद सबसे पुराना इजी टू कीप टक्सीडो एंजल, ब्लू एंजल, रेड आई रेड कैप, व्हाइट एंजल, बहुत कलर्स और वेराइटीज भी है। इसमें एक वेराइटी है एल्टम एंजल, जो ऑलमोस्ट 1 फुट तक ग्रो हो सकता है। इसके लिए बड़ा टैंक लगेगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्लीज डोंट गेट इनटू दैट। नॉर्मल डे टू डे एंजल्स छोटा खरीदो, इतना साइज तक आएगा, उसको अच्छा फीड करो। अगेन एग्रेसिव फिश श्रिम्प खाएगा, ठीक है। एंड शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, ये सिक्लिड वेराइटी है। एंजल फिश जो है सिक्लिड है, लेकिन फ्रेश वाटर सिक्लिड का ही वेराइटी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एंजल फिश, और वो छठा वेराइटी का, इजी टू कीप। सातवां वेराइटी है रासबोरस। छोटे हैं 1 इंच, ठीक है, और बहुत छोटे भी आते हैं। वर्ल्ड का सबसे छोटा फिश है मस्कीटो रासबोरस, बहुत चिट्टू सा है। वो श्रिम्प टैंक में बहुत मस्त काम करता है, बिकॉज छोटू है, घूमता रहेगा, प्लानेरिया खाएगा, थोड़ा बहुत श्रिम्प का बच्चा भी खाएगा, लेकिन उतना भी नहीं, ठीक है। अलग अलग है, बोरा रासबोरस, इंडियन रासबोरस भी है, फिर साउथ अमेरिकन भी है, हार्लिक्विन रासबोरा, एसपी रासबोरा, बहुत सारे वेराइटीज हैं। अगेन इजी टू कीप, एक झुंड में घूमते रहेंगे, खाना नॉर्मल डालो, ओवर फीड मत करो। कोई भी प्लांटेड टैंक में एडजस्ट हो सकते हैं। एक 2x1x1 टैंक में अप टू 30 फिश डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर ये प्लांटेड टैंक अच्छा है, घना है, तो इनका कलर ज्यादा सुंदर दिखेगा। रासबोरस में आप एक और वही 7वां बोल सकते हैं, सिमिलर वैरायटी है डैनियोस, इंडियन डैनियोस जो है, बट ट्राई टू गेट स्मॉल वंस। ज़ीब्रा डैनियोस वगैरह छोटे जो है वो बेटर है, बट फास्ट मूविंग, याद रखो। डैनियोस बड़े भी आते हैं, वो ज्यादा काम नहीं आते हैं, ठीक है। बड़े हैं, फास्ट मूविंग है, एक प्लांटेड एक्वेरियम में मुश्किल है, और प्लांट्स खाएंगे, सो कीप दिस इन माइंड। 8वां टेट्रास। आप में से कितने लोगों को ये मालूम था कि पिराना, आपने सुना है ना पिराना, जो पूरा मच्छी खा जाएगा, कुछ भी खा जाएगा, उसके बारे में फिल्म्स भी बने हैं। सब टेट्रा पिराना स्पीशीज के ही हैं, सेम स्पीशीज। पिराना इज ऑल्सो अ टेट्रा। तो सोचो कि ये वही स्पीशीज का है, तो सब टेट्रास में वो थोड़ा एग्रेसिव या एग्रेशन रहेगा। तो जैसे कि कुछ में एग्रेशन कम रहेगा, कुछ में ज्यादा। जो कम एग्रेसिव वाले हैं, कार्डिनल टेट्रास, रमिनोस टेट्रास, हॉकी स्टिक टेट्रास, एंड अ फ्यू मोर, ठीक है, ग्लो लाइट टेट्रा वगैरह वगैरह, एम्बर टेट्रा। जो मोर एग्रेसिव है, ब्लैक विडो, सर्पे टेट्रा, ठीक है, कोलंबियन टेट्रा। जो ज्यादा एग्रेसिव है वो डायरेक्ट श्रिम्प हंट करेंगे, खाएंगे। जो कम एग्रेसिव है बच्चे खाएंगे। लेकिन ये भी झुंड में ज्यादा अच्छे दिखते हैं, दे लुक गुड इन स्कूल,
ठीक है, दे आर ऑल स्कूलिंग फिश। और टेट्रास के लिए अगेन कोई भी अच्छा प्लांटेड टैंक, हेल्थी प्लांटेड टैंक में कलर्स ब्यूटीफुल दिखेंगे। जितना टेट्रा का कलर अच्छा है उतना आपका टैंक हेल्थी है। अगेन फीडिंग हिसाब से करो, ओवर फीड मत करो, जितना फिश खा सकता है उतना ही फीड करो। और टेट्रास प्लांटेड टैंक में बहुत सुंदर दिखते हैं, सब टेट्रा ही है आजकल, नियॉन टेट्रा भी है। नियॉन और कार्डिनल में डिफरेंस क्या है? नियॉन छोटा आता है और उसका कलरेशन जो रेड एंड ब्लू है वो कम डिम रहता है। कार्डिनल थोड़ा बड़ा आता है, थोड़ा लंबा भी आता है और उसका कलरेशन ब्राइटर होता है। याद रखो, ये छोटा सा डिफरेंस है। अगला फिश जो है रेनबोज। रेनबोज में बहुत सारे छोटे और बड़े वैरायटी है। थ्रेड फिन रेनबो, ओके, येलो फिन रेनबो, नियॉन रेनबो, ये सब छोटे वैरायटीज कोई भी प्लांटेड टैंक में फिट हो जाएंगे, छोटा या बड़ा। ओके, और उससे भी बड़े हैं बोस्मानी रेनबो। ओके, ये सब बड़े बड़े हो जाते हैं और वो छोटे प्लांटेड टैंक में थोड़ा डिफिकल्ट उनको लगता है रहना। ठीक है, रेनबोज में भी सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, उनको अच्छा ऑक्सीजन चाहिए, हेल्थी प्लांटेड टैंक चाहिए। वो अगर सराउंडिंग अच्छा है तो उनका कलर बहुत सुंदर आएगा और सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। अगेन वेरी एग्रेसिव श्रिम्प खाते हैं पूरा, अगर बड़े मछली तो पूरा का पूरा श्रिम्प उड़ाएंगे, ये याद रखो, रखते हैं। और अगेन रेनबोज बहुत ग्रीडी होते हैं, जितना खाना डालोगे वो खाते रहेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप खाना डालोगे, आप हिसाब से डालोगे, जरूरत के हिसाब से डालोगे ताकि फिश हेल्थी रहे। खाना ठीक ठाक डालो तो फिश बहुत हेल्थी रहता है। तो रेनबोज था 9। So, how he told about the rainbows, right? Similarly, are guppies. Even guppy fishes, when you try to feed them, they keep on eating. They are voracious eater. They will keep on eating. So, but इसका मतलब ये नहीं कि वो खा रहा है तो आप डालते जाओगे. You should always maintain the amount of food given to these fishes, even if they are voracious eater. Okay, you cannot overfeed these fishes. 9th, तो 10th और समझो लास्ट नहीं है, ओके, बट 10th इजीएस्ट कीपिंग फिश एक प्लांटेड एक्वेरियम बिगिनर्स के हिसाब से वुड बी रैम्स। एक जोड़ी रैम रखो एक छोटे टैंक में, बच्चा डालेंगे। अपिस्टोगामा इज अनदर वैरायटी, सिक्लेट वैरायटी है, ठीक है, बहुत सुंदर फिश, छोटे नैनो टैंक्स में रख सकते हो, बहुत कलरफुल। और ऑफ कोर्स जो मैंने मिस नहीं किया है, ठीक है, जितने भी मैंने 10 वैरायटीज बताया आपको वो सब डेकोरेटिव माने जाते हैं। फंक्शनल जो है ऑटोसिंक्लेस, ब्रिसल नोज, साइनीज एल्गेटर, अमानो श्रिम्प, चेरी श्रिम्प, ये सब जरूरतें हैं टैंक के लिए, ठीक है। बाकी जो है वो डेकोरेटिव बनते हैं। ओके, सो आपने सुना टॉप 10 जो बिगिनर्स के लिए इजी टू कीप। मैं क्विकली रिपीट करने वाला हूं। पहला है फाइटर फिश, दूसरा है गपीज, तीसरा है प्लाटीज, स्वॉटेल्स, मोलीज, चौथा गोरामी, पांचवा जो है बार्ब्स, कोई भी वैरायटीज या इजीली अवेलेबल, छठा जो है एंजल फिश, ओके, सातवां जो है रास्बोरास, बहुत कलरफुल, मेनी वैरायटीज, इजी टू कीप, आठवां टेट्रास, टेट्रास तो बहुत पॉपुलर है, सबको मालूम है। नौवां जो है रेनबोज, अगेन रेनबोज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कीप, इजीली अवेलेबल, नियॉन रेनबोज सबसे ज्यादा पॉपुलर। और 10वां है कुछ एक्सोटिक, जैसे कि अपिस्टोगामास है, रैम्स है, पैडिस है, ये सब प्लांटेड टैंक में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो फिश हमेशा समझदारी से खरीदो। हमारा अगला वीडियो जो है इसी के बारे में है कि So that was all about the fish tank, how you need to actually, properly gain the idea